हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी। और इसमें बात होगी वेस्ट वाटर की, उसको प्योरीफाई कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ द वेस्ट वाटर एंड व्हाट आर देयर इम्प्योरिटीज़। और भी होंगी काफ़ी सारी चीज़ें कवर। वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक एंड कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इन दिस एंटायर वीडियो। तो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए बिना स्किप किए। एंड for such inspiring educational video every day on your mobile, just make sure you hit the subscribe button and the bell icon to never miss any video update. तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट वी विल कवर। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट द वेस्ट वाटर, कि वो आखिरकार होता क्या है। सो water that generally comes out from kitchen, toilets, etc. that goes into drain is the dirty water. जो भी used water होते हैं either from the kitchen, from the toilets, जो होता है जो कि drain में चला जाता है वो dirty water होता है। This used water contains pollutants. इसमें ये used water में क्यों ये dirty water है, क्योंकि इसमें pollutants हैं, इसमें प्योरिटी नहीं है, इसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, इस वजह से ये वेस्ट वाटर है। ठीक है, द डर्टी वाटर इज द वेस्ट वाटर, बट इट कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रिमूविंग द पॉल्यूटेंट्स। बट उसकी पॉल्यूटेंट्स को अगर रिमूव कर दो तो हम इसका यूज़ फिर से कर सकते हैं। अच्छा, वेस्ट वाटर क्या होता है ये समझ में आया। सीवेज क्या होता है ये वर्ड भी सुना होगा आपने। The wastewater released by household is called sewage. वो टाइप का वेस्ट वाटर जो कि हाउस होल्ड से इन जनरली रिलीज होता है, मतलब हर घर से। सो दैट इज द सीवेज। वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम एज वेल एज इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, ऑल आर द सीवेज। मतलब इन द कंपाउंड जब उनको पूरा बोलते हैं वेस्ट वाटर को, वी डू नॉट से वेस्ट वाटर, वी से सीवेज। दैट टर्म इज मोस्टली यूज्ड. It is a liquid waste which has dissolved and suspended impurities in it. Okay? The impurities are known as contaminants. So, sewage कैसे, sewage में क्या क्या है? The organic impurities like human feces, animal waste, oil, urea, pesticide, herbicide, fruit and vegetable waste. ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स, देन द न्यूट्रिएंट्स, द फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, देन बैक्टीरिया दैट मे कॉज द वाटरबॉर्न डिजीज, देन द अदर माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोआ विच मे कॉज डिसेंट्री। तो ये सब कुछ, ये सारी इम्प्योरिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स जो इसमें प्रेजेंट होती हैं एक सीवेज में। ओके, तो सीवर्स क्या होते हैं? द अंडरग्राउंड पाइप दैट टेक अवे द डर्टी ड्रेनेज वाटर एंड वेस्ट मैटर इज कॉल्ड सीवर। सीवेज समझ में आया, जो कि एक वो सारे तरीके के वेस्ट वाटर दैट इज रिलीज फ्रॉम हाउस, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, एवरीवेयर इज सीवेज। अब सीवर क्या है? द पाइप दैट allows that take away the dirt, drainage, water and waste matter is the sewer. Okay. Network of interconnected sewer is the sewerage system. जब इनका पूरा जो नेटवर्क होता है, जो किसी भी सिटी, किसी भी जगह, किसी भी विलेज में होता है, that network is called the sewerage system or sewer system. Okay. Then सिस्टम है, उसमें वेस्ट वाटर है। हमने बात की थी कि अगर वेस्ट वाटर को आप रीयूज़ करते हो, इम्प्योरिटीज़ हटाते हो, तो उसका रीयूज़ कर सकते हैं। वी जस्ट रीयूज़ द रिसोर्स। सो देयर इज़ अ प्रोसेस टू ट्रीट दैट वेस्ट वाटर, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दैट प्रोसेस थ्रू विच वी जस्ट treat the wastewater, remove the impurities and reuse it. It is the wastewater treatment plant, also called sewage treatment plant. Place where wastewater is brought for the processing is the wastewater treatment plant. Okay, the treatment involves physical, chemical, biological process.
फिजिकल से रिमूव फिजिकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल से केमिकल इम्प्योरिटीज़ एंड बायोलॉजिकल से ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं. दिस इज़ द 3 treatment plant, that is the wastewater treatment plant, as you can see. Here first this is the sewage pipe that is coming into the plant. यहाँ से हमारे पास वेस्ट वाटर आ रहा है. It passes through the screen. स्क्रीन से पास करने पे that is the smaller आपकी आयरन की ग्रिल्स हैं जिनके थ्रू ये वाटर पास आउट किया. तो यहाँ पे द बिगर इम्प्योरिटीज़ गेट अवे. ओके, यहाँ पे मतलब फिजिकल बिगर इम्प्योरिटीज़ जो कि थोड़ी साइज में डिफरेंट हो, बड़ी हो, वो यहाँ पे हट गई. दिस इज द रेस्ट वाटर दैट इज गोइंग इनटू द अनदर प्लेस, द कम्यूनिटर, एंड देयर इट जस्ट गो टू द ग्रिड चैम्बर. नेक्स्ट इज द सी. स्क्रीन के बाद आया नेक्स्ट थिंग दैट इज ग्रिड चैम्बर. इसमें क्या हुआ, देयर इज द ग्रिड is disposed here. Grit means grit, kind of dirt that is physical again. Physical dirt is just disposed here, and the rest sewage we just pass through the next chamber that is having the pure primary clarifier. Again see, basically यहाँ sedimentation हुआ. Okay, then it just moved to another area called aeration tank. यहाँ पे केमिकली इसको एयर कंप्रेसर के थ्रू प्योरीफाई किया जा रहा है. ओके, देन दिस जस्ट गो अगेन टू द सेकेंड क्लैरिफायर. अगेन यहाँ पे सेडिमेंटेशन है. तो सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, यस, दिस इज गेट सेडिमेंटेड डाउन. और धीरे धीरे ये जो पास कर रहा है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. इसमें से जो ज़्यादा डर्ट है वो और भी नीचे सेडिमेंट होते हुए दिस इज़ जस्ट एंड में डिस्पोजल हो गया इसका. और जो रेस्ट बचा लिक्विड है अगेन रिटर्न टू द स्लज पंप इन दिस वे एंड दिस रिटर्न अगेन टू द एयरेशन. तो ये तब तक होता रहेगा जब तक वी डू नॉट गेट द प्योरीफाइड वाटर हियर. ओके, एंड देन लास्ट दिस disinfectant is used to remove all the infectious things from the water, and that is discharged through the surface water. That is the pure water is here, reusable water is here discharged. Okay, समझ आया. सबसे पहले फिजिकल में स्क्रीन्स, देन देयर इज ग्रिड चैम्बर, देन देयर इज केमिकल आए धीरे धीरे, प्राइमरी क्लैरिफायर, देन एयरेशन टैंक, देन द सेकेंडरी क्लैरिफायर, देन देयर इज डिसइंफेक्टेंट, and then finally we get the pure water, the reusable water. So first we start with the straining process, then there is the grit and stand removal, then there is the sedimentation tank, aeration tank and chlorination. Okay, यही सब अभी हमने वहाँ पे भी पढ़ा. यही हमारा इसका प्रोसेस है. अब एक एक स्टेप को हम अच्छे से समझते हैं. स्क्रीनिंग. The bar screen first remove the large rubbish object like rag, sticks, cans, polybags, napkins, sanitary towels, so many things from the wastewater. Then the grit sand removal. Grit sand removal process में क्या है? The sand and grit that are present in the wastewater settle down slowly at the bottom of tank. As water passes slowly through this tank, the settled water and impurities are then removed from tank time to time. सिंपल है, ये धीरे धीरे पास करा था टाइम के साथ. दैट डर्ट गेट सेटल डाउन, दैट्स सैंड एंड ग्रिट. सो इट जस्ट मेक रिमूव दैट impurity. Then the sedimentation. In the first sedimentation, tank is sloped towards the center. Solid like faces settle in the bottom and is called sludge, which is then removed by scraper. और यहाँ पे जो डर्ट जो impurities settle down होगी उसको बोलते हैं sludge, and that is removed by the scraper. The biogas produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity. और इसके इस sedimentation tank में ऐसा because organic waste get sedimented down, so that produces the biogas. तो बायोगैस वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उससे केमिकल रिएक्शन से देयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड
and this biogas can be used as fuel to produce electricity. The water gets cleared of rubbish, oil, grease, etc. and we get clarified water which is sent to the aeration tank for the next step. तो aeration tank में क्या है? The watery waste, अब डर्ट ग्रिड हट गया, फिजिकल वेस्ट हट गए, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी कुछ हद तक हट गई, तो अब क्या बचा है? वाटरी वेस्ट बचा है. द वाटरी वेस्ट ऑलरेडी कंटेन बैक्टीरिया इन इट. ओके, सो द compressed air bubbles are passed through this water to provide oxygen to the bacteria to increase the bacterial activity, which ultimately digest human waste, food waste, soaps, and other unwanted and harmful matter, still remaining in the wastewater, leaving behind fairly pure water. एयरेशन समझ आया? एयरेशन में क्या हुआ कि अब देखो वाटर वेस्ट ही बचा है एंड वाटर वेस्ट कंटेन्स बैक्टीरिया इन इट, एयरोबिक बैक्टीरिया. तो उसमें एयर बबल्स पास किए जाते थे टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन थिंग होगी, यानी वो डाइजेस्ट करेंगे प्रेजेंट उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट या किसी भी टाइप का भी वेस्ट जो बचा है उस वाटरी वेस्ट में. द बैक्टीरिया विल स्टार्ट ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग इट. सो दैट्स व्हाई दे रिमूव द वेस्ट थिंग्स एंड लीव बिहाइंड द फेयरली प्योर वाटर. ओके, then there is chlorination, where the microbes present get settled at the bottom of the tank in the form of activated sludge, which is about 97% water. At this stage, water has very low level of organic matter, suspended matter, and does not contain many harmful things. It is safe for human consumption, but is disinfected by chlorine or ozone before distributing it. अब यहाँ पे प्रेजेंटली वी हैव द 97% ऑफ वाटर. ओके, इसमें बहुत ही लो लेवल पे ऑर्गेनिक मैटर बचा है एंड कोई भी हार्मफुल थिंग ज़्यादा नहीं बची है. ओके, सो इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बट वहाँ पे अभी भी क्लोरीन और ओजोन का डिसइंफेक्शन है, जो कि इसलिए हम लोग उसको अभी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. इसलिए वी यूज़ द क्लोरिनेशन प्रोसेस टू रिमूव दैट डिसइंफेक्टेंट्स. ओके, नाउ अब ये बात हो गई कि कैसे वेस्ट वाटर प्योर होता है. अब वेस्ट वाटर कम से कम हो या फिर एक रेगुलेशन वे में वी जस्ट हैव टू कीप एन आई ऑन आवर डेली एक्टिविटीज़, जिससे कि वी जस्ट रिड्यूस लेस गार्बेज, लेस wastewater. Okay, so cooking oil and fat should not be thrown down the drain. They can harden and block the pipes. In an open drain, the fat clog and the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water. Throw oil and waste fats in the dustbin. तो हम जब भी we use the drainage or the waste thing to just remove the waste materials, तो ये ध्यान रखें कि आप कभी भी ड्रेन्स में कुकिंग ऑयल या फिर फैट्स रिलेटेड कुछ भी उसके अंदर न डालें, बिकॉज दैट विल जस्ट मेक इट हार्ड टू फिल्टर द वाटर इनटू बैक टू द प्योर थिंग. ओके, यूज टी लीव्स, सॉलिड food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, etc. should be also thrown in the dustbin, not in the drains. These just choke the drains. क्या क्या? Used tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towels, ये सब चीज़ें हमें डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, ना कि drains में. These just choke the drains and do not allow the free flow of oxygen. This hamper the degradation process. Then the chemicals like paint, solvent, insecticides, medicines and motor oils should not be thrown in the drain as they kill helpful microbes which digest the organic waste. और हमें क्या नहीं डालना चाहिए drains में? The chemicals like paint, solvent, insecticides and medicines या motor oil, ये सब भी हमें drains में नहीं dispose करना चाहिए. Okay? So creating hygienic environment around us, which is essential for preventing disease and keep good health, is called sanitation. Sanitation मतलब क्या हुआ? एक तरीके का healthy environment, hygienic environment, which involves
some steps that prevent us from disease or keep us in the good health. So poor sanitation and contaminated water supply is the cause of large number of disease. जब यही sanitation हम नहीं रखते यानी साफ सफाई नहीं रखी, नहीं उसको हमने अपने आप को हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रखा और हम हमारे साथ अब नहीं रखेंगे तो वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाएगा पॉल्यूटेंट्स के साथ. So that supply will just cause large number of disease. So that's untreated human excreta is the health hazard causing various waterborne disease like cholera, typhoid, dysentery, polio, hepatitis and so much more. So we must use all the hygienic step process that we can to just make ourselves healthier. Alternative source sewage disposal, there are some अलग तरीके के sewage disposal ideas rather than the sewage system. So there is septic tanks. In this, human waste is allowed to settle in the tank where anaerobic bacteria decompose the waste. Compositing pits, and it is a dry toilet that is not connected to the sewer line or the septic tanks. Toilet seat is fixed to the compositing pits dug into the soil. These are the chambers that break human waste aerobically and convert into compost. It is used where there is no or limited water supply. So वहाँ पे भी आप कैसे बिना वाटर सप्लाई के भी अपने वेस्ट को रिड्यूस या फिर जस्ट रिमूव कर सकते हो ऑर्गेनिकली. That is why these systems are made. There is the chemical toilets where the limited storage capacity for human waste and need to be emptied periodically. These are the toilets where we use the chemically treated reservoir located just below the seats. The chemical reduce the foul smell coming out the excreta and carry out the partial disinfection of the human waste. और इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है और हमने ये सारी चीज़ें जानी about the wastewater, about the sewage system and how we clean the wastewater. I hope आपको ये सब समझ आया होगा और नए नए कुछ सीखने को मिला होगा. ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, share it with your friends and subscribe to our channel if you haven't yet.